our channel Easy Bro. In this series, we are gonna diving into the SQL and starting with the introductory video. So just look at the whiteboard and understand a very fundamental question: why SQL? It's important to understand why we are focusing on SQL right from the beginning. So let's take a look at this whiteboard again. Why SQL? We'll start with a very simple definition of SQL. So it's a way to interact with the database. This is a database and you retrieve information. So this is what the basic work of SQL is. And SQL is also very crucial for data analysis and for business insights and also for backend development. So this is what our SQL basically does. Now to understand more, let's take a very simple example. Okay, so that you all can understand very clearly what I mean to say. Suppose you have a online clothing store. In that clothing store, you have a customer table, then you have your monthly records, orders, and you have your stock levels, and you have your payment, stock, month-wise order, and your customers. All this data is stored in your database. Okay, इस टेबल को नाम दे देते हैं कस्टम. ओके, ये आपका डेटाबेस का नाम हो गया. इस डेटाबेस में आपके कस्टमर का नाम सेव है, आपके मंथली ऑर्डर्स कितने हैं वो सेव है, आप स्टॉक सेव है और पेमेंट कैसे वो सेव है. नाउ लेट्स लुक एट अ सिनेरियो. मैं आपको पूछूं कि आई वांट नेम्स ऑफ द पीपल हु शॉप्ड इन जून एंड मुझे लिस्ट चाहिए सारे कस्टमर्स की जिन्होंने जून में शॉपिंग की एंड मुझे टॉप 3 नाम चाहिए जिन्होंने जून में सबसे ज़्यादा शॉपिंग की. ओके, सो आप कैसे करोगे उसको? इसके पास दो ही रास्ता है. फर्स्ट इज मैनुअली, जिसमें यू विल गो टू द ईच रिकॉर्ड. आप कस्टमर्स में जाओगे, नाम ढूंढोगे एक एक करके, फिर आप मंथ में जाओगे कि जून महीना का है, जुलाई महीना का है, फिर आप एक एक करके काउंट करोगे. सो दिस इज वेरी रिस्की एंड इट्स ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो बहुत एरर्स भी आ सकते हैं एंड वी कैन नॉट अफोर्ड एरर्स बिकॉज इट विल अफेक्ट आवर बिजनेस इंटेलिजेंस और आवर बिजनेस इनसाइट्स. सो व्हाट वी गोना डू, और द सेकेंड वे इज SQL वे. इसको नाम देंगे मैं SQL वे, ये अपने भाई का स्टाइल है. यू कैन जस्ट राइट एन SQL क्वेरी बाय जस्ट यूजिंग सिलेक्ट. ओके, दो कॉलम का नाम लिखा, कौन से टेबल से चाहिए वो लिखा, वेयर क्लॉज यूज किया, कंडीशन लिखा, जून महीने में कस्टमर चाहिए, दैट्स इट. ये 3 क्वेरी लिख के आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है कि जून महीने में सबसे ज़्यादा कौन से कस्टमर्स ने शॉपिंग की. दैट इज व्हाट द पावर ऑफ SQL इज. This is how quickly and easily SQL can handle such tasks. And इस सारी सीरीज में we will cover everything from the basics to more advanced topics in SQL from zero to knife. Okay, and by the end you will be well prepared to use SQL in your various real world applications and you would have a very strong foundation in SQL. So let's start on this journey with SQL. So in our previous slide we just saw why we're gonna use SQL in this series, but along with that it's also important we should know why big companies rely on SQL. We'll see it one by one. First, I will tell you the top 3 qualities, okay, and we'll explore that one by one. The very first quality is robust. Okay, so what does robust means? It means SQL is strong and dependable. अब इसको एग्जांपल में देखेंगे. अब बिग कंपनी लेते हैं Amazon. ओके, Amazon. अब Amazon में हर रोज मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं. हर रोज डेटा यहाँ से वहाँ होता है, हर रोज, वो भी मिलियन की संख्या में. So SQL, what does SQL does? It manages all that data without crashing. This is what robust means. Robust means SQL manages all the data without crashing and SQL is a strong and dependable command language. Okay, so this is what the first quality of SQL is, robust. So now we'll see the second quality, it's scalable. Scalables, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि scalable means a type of growth. Okay, अब इसको एग्जांपल में लेते हैं कि समझो एक कॉफी की टपरी है. ठीक है, कॉफी की टपरी है एंड इन सम ईयर्स वो कॉफी की टपरी स्टारबक्स हो जाता है. बिग चेन कंपनी स्टारबक्स. सारे बड़े एग्जांपल्स ले रहा हूँ, सारे बड़े कंपनीज का नाम ले रहा हूँ. ठीक है, तो इस जर्नी में व्हाट हैपेंस इज कस्टमर्स बढ़ रहे हैं. ठीक है, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं मतलब डेटा बढ़ रहा है. तो व्हाट डज SQL डज? अलॉन्ग विद दिस SQL ऑल्सो मैनेजेस ऑल द डेटा एफिशिएंटली. जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे डेटा ग्रो करता है, वैसे वैसे ही SQL अपना काम करते जाता है, वो सारे डेटा को मैनेज करते जाता है. विच मीन्स स्केलेबल मीन्स SQL can handle extra data as the business expands. So this is what the second top quality of SQL is, that is scalable. Now we'll discuss about the third quality, and the third quality is reliable. Reliable means your data is safe and secure. इसका एकदम अच्छा एग्जांपल लेंगे कि जैसे बैंक्स होते हैं, आपको बैंक पे बहुत भरोसा होता है कि आपका मनी बहुत सेफ है, मनी सेफ है बैंक्स में. ठीक है, आपको लगता है सिक्योर है.
बहुत सिक्योर है आपका पैसा बैंक में, आप उसको कभी भी निकाल सकते हो, पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सेम लाइक दैट companies also rely on SQL so that their data is safe, secure, and we can retrieve whenever we need it. So this is what reliable is, which means your data is safe and secure and it's very accurate and we can store it properly and we can access whenever we need it. So this is the top 3 qualities of SQL which makes big companies rely on SQL. So now I think we are very clear why we're gonna use SQL and we're gonna use SQL in this series. So let's see what's coming up next. So now what's next? Let's see what's coming up next. Okay. So in our next upcoming series, or you can see in our next video, we'll dive deep into the basic CRUD operations. We'll start with the CRUD operation SQL. Okay, so these are the fundamental operations you will need to interact with in database. CRUD operation से आप database में थोड़ा interaction कर सकते हो, ठीक है? So this is where we are gonna start. Okay, and I'm sure by mastering these CRUD operations, you will have a strong foundation to build and as we move on over the next complex queries. ठीक है, एक बार आपने CRUD operation थोड़ा master कर लिया, it will help you in the upcoming series जब हम complex SQL series solve करेंगे. So yes, that's it about this video and we'll see you in the next video where we'll start about our CRUD operations. तब तक stay tuned and thank you so much for watching this video.